नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सैक और वैक ये दो नई चीज़ें हैं और ये NEP 2020 करिकुलम फ्रेमवर्क का पार्ट है। और सैक कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग का जो पेपर है वो काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। हमारे साथ SGTB खालसा कॉलेज में फैकल्टी प्रोफेसर परवीन और लांबा हैं और उनके साथ उनकी दो कलीग भी हैं जिन्होंने इस पेपर को आसान बनाने के लिए एक किताब भी लिखी है। आइए उनसे बात करते हैं सैक के इस खास पेपर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मुनमुन जी। इज़ वेरी लाइवली कंटेम्प्रेरी और वी फाइंड सो मच एनरिचिंग डायलॉग के ऑन on digital marketing. You all will agree with me that our lives are nowadays too much prefaced with empowerments, innovations, experimentations. And due to that, our educational environment is also undergoing changes. So the need is there to cope up with these changes also. And for that purpose, we have NEP, which is focusing at developing, we find our students intellectually, creatively, subjectively, logically. And then we have generic elective papers, which of course are providing multidisciplinary and interdisciplinary education to our students. The University of Delhi is providing skill enhancement courses and value addition courses to different domains so that our students are equipped with skills also to cope up the practical world, corporate world challenges, like we have coding skills, communication skills, computer related skills, marketing skills, financial management skills, etc. So this to say at the macro level that our students, they should not be only versatile in theory aspects, but they should become versatile in the application aspects also. So these skill enhancement papers naturally are promoting that our students, they should become skilled for application aspects of the concerned subject, and they appropriately are able to meet the contemporary challenges of the corporate world. Now in this, we have a very facilitating, interesting and thrilling subject, digital marketing, which of course is a very important feature of our modern marketing, and that uses internet and technological, we find online platforms and tools, techniques to connect with the people. And we find this is a very fast growing, holistic and mature form of marketing. Even Philip Kotler also says that marketing is a race without finishing line. So we find we have to enrich this subject so much that our students, they become versatile in handling, we find all the aspects of marketing also. And the traditional marketing, it was talking about at people, but this modern marketing is talking with people. So naturally, it is awakening to a revolutionized era of knowledge and information via using we find technological, online tools, internet, etc. And our students are so much aware about this. So they are finding this subject, we find very preferred, they are having preferences for it, and the paper is also gaining very much popularity also. And to talk about the recent COVID times, we find we have seen the situation that our lives and the corporate world was almost paused and at standstill. And but we find thanks to this digital technologies, we find its tools that we could conduct our classes also regularly, and we find the firms, they also survived also and they expanded also. And it has been asserted that 75% of the business they got via e-commerce. And those firms which were crawling for survival,
They also learned their lessons from this Amazon, Google, etc. And they also started incorporating this digital marketing techniques in their connecting with the people, with their consumers, etc. And we find immense benefits are also there. It has turned out to be so gainful, impactful, forceful that more employments are being generated, and this digital marketing is scoped up in your job market also. Like we have digital marketing managers post, video managers, content marketers, data analysts are there. And for that purpose, the students are finding this innovative, and we find we find creative ways and means we find pleasing to them, and they are becoming very dynamic also. Active participation is there, recall participations are also there, and on top of that, naturally, it is having a perpetual profits, market share, what we find, enriching our lifestyles, everything is there. So the firms, and we find naturally we find students, they are trying to find out, we find reorient and redefine themselves with how to have value theorems for this subject, and also to talk about the marketer, how to have value theorems for its customers. So naturally we find this digital marketing is becoming a very interesting discipline for them. And I would also suggest my students that they should have this option, because in future they will be able to have, we find, would be prefacing and helping them to cope up with we find the challenges which may be coming with the change in technology, and with we find other aspects of your educational environment. And when they go to the corporate world, it will be of immense use to them. As I have mentioned, that job opportunities are also being enriched. It is enriching their lifestyle also. तो मैम सर यही वजह है कि जो ये SEC के अंतर्गत ये जो पेपर है, ये स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसमें केस स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे को नेचुरली थ्योरी कई बार पढ़ के काफ़ी उनको वो भी हो जाता है कि वी नो दीज थिंग्स एंड व्हाट्स द यूज़, बट व्हेन एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज़ आल्सो अकम्पनीड विद थ्योरी, so naturally we find their interest is retained also, and they try to boost up their confidence for finding various other ways by which they can improve upon their strengths, etc. And naturally we find this paper is turning out to be very preferred paper by the students. जी, तो NEP 2020 में मैम जैसे इस पेपर को ऑप्ट किया है, तो स्टडी मटेरियल की बहुत कमी है, तो इस बुक को लिखने का आइडिया कैसे आया? ये आपके साथ आपकी दो और कलीग हैं, इनका परिचय भी करा दीजिए। ठीक है। मेरी co-authors मानसी बंसल, who is also a senior faculty here in our SGTB Khalsa College, and my colleague Amanjot Kaur, who is very young and teaching also this paper. So she will also like to give deliberations on this. तो हम मानसी जी से जानना चाहेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया तो अब हर कोई यूज़ करता है, तो इस किताब को लिखने के लिए मतलब आइडिया कैसे मिला, क्योंकि स्टडी मटेरियल की बहुत कमी है? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल यू स्टार्टेड ऑन अ राइट नोट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ shortage of the material of study material on this particular topic, but what clicked our mind was the thing that clicked the mind of all three of us, because in the last year we felt that the students were not able to find the reading material, so we thought why not have a book on this particular paper through which we can provide the student a ready material so that they can have an access to that ready material and they can study the paper. And since this paper, these days, our students' lives start with a mobile phone in their hand. We get up, the one thing that we see in the morning is a mobile phone. And mobile phone, what we see are the pop-ups, notification. What are these? These are ads, marketing ads that we see. So students are experiencing digital marketing in their lives, in their everyday lives, from morning
till they go to sleep, but to teach them from that perspective. Okay, you have been using it, now we are linking the practical with the theory. So this paper is a great bonus or say incentive to the student, and they are finding it very they relate to the paper when they come to the class and they study this paper. They relate to the concept. Okay, we have been using it in our daily lives, but we were not knowing actual nitty-gritties of all those concepts like search engine optimization, search engines, what are the various tools, browsers, search advertising. So all these concepts, they have been experiencing it, using in their lives, browsing on their phone, doing all the marketing and buying and selling, but to link it with the concepts, theoretical concepts, so this paper is an added advantage for all the students. जहाँ तक मैम कंटेंट की बात है, जैसे आपने सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया, मैम ने पूरा एक ओवरव्यू बताया अभी लंबा मैम ने, तो जैसे बच्चों को अपने सिलेबस के हिसाब से इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, सिलेबस के हिसाब से पहले हम वी टेल द स्टूडेंट्स द नीड, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, नीड फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टुडेज वर्ल्ड, एंड vis-a-vis ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हाउ इज it is different vis-a-vis digital marketing. Then we tell them about search engine optimization. We tell them all the tools and techniques which are used by the companies, and apart from that, practical exercises are also linked with this particular paper, where they experience, where they do whatever they are studying, they are practically doing that in the class, because there is a practical paper they have to attempt for 40 marks in the final exam. So a paper, any paper which is a mixture of theory and practical, would give a better insight to a student. So this paper is a good combination of theory and a practical. And they know that what they are doing in the classroom, they will be now going and experiencing it in the corporate world also. And as your Bill Gates also says that if your business is not on internet, then your business would be out of business. So the students are accepting this fact that what they are doing it, naturally its usefulness they will be having when they will be going to the outside the college and experiencing that thing in their corporate world also. अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं मैम कि कितना समय लगा इस बुक को कंप्लीट होने में? It took about 4 to 5 months. 4 to 5 months. तो मटेरियल कैसे आप लोगों ने जो है वो इसके लिए रिसोर्स जुटाया कि एक अच्छी किताब बच्चों को दी जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं? Yes, sir. So we took some recent examples from Google Scholar. We searched for the articles related to this topic, and then we. अच्छा लामा मैम, आपसे जानना चाहते हैं, आपकी बुक में एक लिखा हुआ है कि विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, है ना? तो उसकी एक्सरसाइजेज भी, तो किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं इसमें? Mostly Amanjot has we find incorporated those practical exercises, so naturally even I have also a small idea, and she is teaching this paper also, like what the theory is, how you will be applying that is what the theory syllabus is, how that application aspect would be there. हाँ, क्योंकि ये पेपर ऐसा है Sir, it's related to Facebook page creation and Gmail, MailChimp for email marketing is there, and Facebook marketplace पे आप कैसे सेल करोगे अपना प्रोडक्ट. So these are the practical parts. आपकी जो किताब है वो ज़्यादातर जो है वो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या बहुत इजी लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है मैम? Of course, Definitely, we have come sir. to the level of students. Naturally, we find the students are profiled we find differences, and naturally we have tried to come to their level, and then we have written the book. मानसी जी से जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने SEC में ये पेपर लिया है और उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आएँ? हाँ जी, देखिए, ये पेपर पढ़ना, पहले मैं कहूँगी कि इस पेपर को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज़ ये नहीं कहूँगी कि बाकी पेपर्स अच्छे नहीं हैं, बाकी पेपर्स की, हर पेपर की अपनी सिग्निफिकेंस है सेक में जो डले हुए हैं, बट ये पेपर थोड़ा सा आज के मार्केट के हिसाब से लिंक्ड है, और जो बच्चे हैं आजकल हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उस एंगल से भी हम देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर. नाउ यू हैव आस्क्ड अबाउट द स्टूडेंट्स हाउ टू गो एंड स्टडी दिस पेपर. What they have to do is they can refer a book on a digital marketing.
आप जो भी बुक्स अवेलेबल हैं हम अपनी बुक रिकमेंड करेंगे, थोड़ा सा हमने स्टूडेंट्स के लेवल पे आके लिखी है बुक, एंड वी हैव इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस हैज़ बीन द बेस पॉइंट फॉर राइटिंग दिस बुक, एंड वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड every word which is written in the syllabus. So just focus on the reading material that is available relating to this particular paper. Do the practical exercises that are given in all the available reading material, and they would be able to easily secure and clear this paper with good marks, with good grades. अच्छा मैम, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, हाँ तो जी। क्या ये आगे अगले सेमेस्टर में भी रहेगा या केवल ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है? ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही पेपर है, क्योंकि नेक्स्ट में वो जाएंगे तो और पेपर्स की ऑप्शंस खुल जाती है। तो फर्स्ट इनफैक्ट मैं तो कहूँगी फर्स्ट ईयर में होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों को ऐसी ऑप्शंस दी जाएं ताकि उनका इंटरेस्ट बने कोर्स के अंदर। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाना पेपर को, ऐसे पेपर्स को पढ़ाना बहुत, आई वुड से दैट्स वेरी गुड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पिकिंग अप दीज पेपर्स। आप मैम पढ़ाती हैं इस पेपर को, तो आपसे जानना चाहिए कि मान लीजिए कि वैसे के इस पेपर को बच्चे ने पढ़ लिया, तो वो कितना मतलब एबल हो सकता है खुद एसईओ करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए? सर बिल्कुल, दे विल बी एबल टू डू एवरी प्रैक्टिकल थिंग व्हेन दे गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज जो हम प्रैक्टिकल पार्ट करवाते हैं कॉलेज में वही उनको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलते हैं। तो जब दोबारा वो आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या उन्होंने किया या नहीं वो प्रैक्टिकल पार्ट, तो दे इजीली डू दैट। लामा मैम, आप से ये जानना चाहेंगे कि सैक की पेपर्स को लेकर कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय में कहा था कि ये फालतू का टाइम ख़राब करने वाली चीज़ें हैं जो एनईपी के तहत आ गई हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि मोस्ट important thing is ki that our students, they should be versatile in skills also and in application aspects also, क्योंकि जब थ्योरी पेपर्स इतने होते हैं तो देयर तो स्टूडेंट्स बाय रट्टाफिकेशन एंड वी फाइंड by any other means, taking coaching etc, they can, and of course attending lectures also they can get through. But here the students, they need to introspect themselves and they have to work on themselves also. So for that purpose, naturally we find that we find insight into them will be of course making them go for, we find the practical aspect, because these papers are very interesting papers. And we find this field work type of work students enjoy more rather than sitting and then studying and all. So practicing, we find is naturally going to be more fruitful to them, and they know it that then when they will go in the corporate world also and then in the job markets also, so immense gains will be coming to them. ये मानसी जी, आपके हाथ में ये बुक भी है हाँ जो आप जी। लोगों ने लिखी है, तो बच्चों को ये किताब कहाँ पर मिल सकती है? बच्चों को ये किताब हर बुक सेलर पे मिलेगी, जो भी बुक सेलर उनके लोकल एरिया में आसपास होगा, हर बुक सेलर के पास ये मिलेगी ये बुक। बाकी अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बुक को अगर एक्सेस करने में, सो दे कैन कॉन्टैक्ट द पब्लिशर। सो JSR पब्लिशर्स हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट देम, because at the back page of the books every detail of the publisher is also given. so they can contact the publisher. But as per our knowledge, this book is readily available at all the bookshelves, so they can have an access to the book. They can go and purchase from their local bookstore and they will find the book. आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि आप इस पेपर को प्रैक्टिकली पढ़ा रही हैं क्लास में, जो है वो बच्चे अभी जो मॉपअप राउंड में भी कुछ बच्चे अभी कॉलेजेस में पहुँचेंगे, लगभग 2 से 2,500 बच्चे, तो उनके लिए तो काफ़ी कुछ निकल चुका होगा, तो अगर वो पेपर ये ऑप्ट करते हैं तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? इतना मुश्किल नहीं है, दे विल ईज़िली डू दैट। हम बिल्कुल उसकी दोबारा से रिवीजन करवाएंगे तो दे कैन ईज़िली प्रैक्टिस। For mop-up students, of course, they will find this paper is very interesting and facilitating,
and what they have missed out, naturally the things are related with our lives also, and naturally we are doing revisions also, and discussion of case studies is also there, and we are going to labs and doing the practicals also. So naturally those who are not able to, they can talk to their concerned teacher, but the thing is very simple, nothing to worry about this. They will be able to adjust themselves to these things also. तो आपने सुनी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग को लेकर खालसा कॉलेज के प्रोफेसर प्रवीण कौर लांबा के अंतर्गत जो है वो ये दो सहयोगियों के साथ मिलकर लिखी गई किताब डिजिटल मार्केटिंग, जो आपको हाथ में दिख भी रही है। और मॉप अप राउंड में एडमिशन लेने वालों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब बहुत ईजी है और आप इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो आप इस पेपर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।